Good morning, student. Welcome to the IP class. Today we will start our chapter, that is Python list. List. A list is a collection of comma separated values, or you can say items within square brackets. Values in the list can be modified. That means it is a mutable type. Mutable type means we can change the values of the elements of the list. The values that make up a list are called its elements. Elements in a list need not be of the same type. लिस्ट के एलिमेंट जरूरी नहीं है कि सेम टाइप के हो. दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, और इट मे बी all elements are of string type, all elements are of integer type, or it may be a combination of string or float, string or you can say integer. Now how can we declare or create a list? This is a list 1. List 1. We will create a list, that is list 1, in which 100, 200, 300, 400 and 500 all are separated with comma. That means 100, 200, 300, 400 and 500 are elements of the list, and all of these elements are included in square bracket. At 0 position, लिस्ट के जो एलिमेंट है उन्हें हम कैसे एक्सेस करेंगे? 0 पोजीशन पे लिस्ट के इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होती है. तो एट 0 पोजीशन 100 इज देयर, एट 1 पोजीशन 200 इज देयर, एट थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन 300 इज देयर, थर्ड पोजीशन 400 एंड फोर्थ पोजीशन 500. All the elements of this list are of integer type. Now we will declare a list 2 in which at 0 position Raman is there, that is the element of the list. At 1 position 100 is there, that means element of the list, and it is of integer type. At second position 200 is there, that is of integer type. At third position 300 is there, that is also of integer type. At fourth position Ashwin is there, which is of string type. That list 2 is a combination of string and integer values. List 3, we will declare a list 3 in square brackets A, then comma, then E, then comma I, then comma O, then comma U. All of these are of character types. At 0 position A is there, at first position E is there, at second position I is there, third position O, and at fourth position U. Now list 4, which is of empty list, we can insert the list element at runtime, creating a list from already existing list. We can create a list from the existing list, like list 5 equal to list 1 colon. That means all the element of list 1 is copied into list 5. When we'll print this list 5, now it will display 100, 200, 300, 400 and 500, which are the element of list 1. So we can create a list 5 with already existing list 1. List 6 is equal to list 2 1 comma 14. That means from 1 to third position. 4th is not including because 4th is the upper limit of the list. That means at 1 position, at second position and in third position elements are copied in list 6 from list 2. At least in list 2, at
first position 100 is there, because at 0 position Raman and at first position 100, this one 0 and this one 100 at one position, 1 and second position 200 and third position 300 is there. तो लिस्ट 6 में फर्स्ट पोजीशन पे लिस्ट 2 के एलिमेंट है 100, सेकंड पोजीशन पे 200 एंड थर्ड पोजीशन पे 300. ये कॉपीड हो गए लिस्ट 6 में. लिस्ट 7 इज इक्वल टू लिस्ट 1. दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 इज कॉपीड इनटू लिस्ट 7. नाउ एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट, ये मैंने आपको बता दिया है कि हाउ कैन वी एक्सेस द लिस्ट एलिमेंट्स एट 0 पोजीशन, starting from 0 position. Now we will do the practical of this list. We will declare a list 1. In square bracket we will write 100, 200, 300, 400. Now we will print this list, print list 1. All the element of this list 100, 200, 300 and 400 are print. Now I want to display the element at 0 position of list 1, that is list 1 0. We will write print 1 list 1 0. At 0 position 100 is there, then only 100 will print, output will be 100. If I write 1 2 3, that means at first position and at second position elements are displayed. At first position 200 is there and second position 300 is there. Third is not included because it is a upper limit of the list. Okay, 0 पे 100 है, 1 पे 200 है, 2 पे 300 एंड 3 पे 400 है. तो थर्ड एलिमेंट को, ये थर्ड पोजीशन के एलिमेंट को नहीं लेगा, ये दैट इज 400 को इंक्लूड नहीं करेगा. फर्स्ट पे 200 और सेकंड पे 300 है, तो फर्स्ट और सेकंड प्लेस के एलिमेंट को ये डिस्प्ले करेगा. नाउ लिस्ट स्लाइसिंग मेथड में क्या है, हमने एक लिस्ट डिक्लेयर कर ली है Z1 विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 121, 451.78, कबीर, रमेश, 890, 453.90. It is a combination of integer, floating and string values. सबसे पहले हमने रखा Z1, स्टार्टिंग से एंड तक ऑल द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विल डिस्प्ले. सारे एलिमेंट आ गए 121, 451.78, कबीर, रमेश, 890, 453.90. नाउ Z1 2 to 5, दैट मीन्स 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे. सेकेंड प्लेस पे एलिमेंट है, 0 पे 121 है, 1 पे 451.78 है और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास एलिमेंट है इसका कबीर. तो स्टार्टिंग फ्रॉम कबीर, फिफ्थ एलिमेंट को नहीं लिखना है, सेकंड पे कबीर आ गया, थर्ड पे रमेश आ गया और फोर्थ पे 890 हमारे पास आ गया इसका. Z1 स्टार्टिंग टू फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ को इंक्लूड नहीं करना है. स्टार्टिंग में 0 पे 121, 1 पे 451.78, सेकंड पे कबीर, थर्ड पे रमेश एंड फोर्थ पे 890 ये आ गए. फिफ्थ को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज फिफ्थ वन इज द अपर लिमिट. Z1 3 to लास्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड पोजीशन. एट थर्ड पोजीशन 0 पोजीशन 121, फर्स्ट पोजीशन 451.78, सेकंड पोजीशन कबीर, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम रमेश टिल एंड. Ramesh 890 and 453.90 is our output. Z1 2 times colon and 2, that means सेकेंड एलिमेंट, हर एक सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे, एक एलिमेंट को जंप कर देंगे.
तो 121, देन 451.78 को लेफ्ट करेंगे, देन कबीर, देन रमेश को लेफ्ट करेंगे 890 एंड देन 453.90 को लेफ्ट करेंगे, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो आर आंसर इज 121, कबीर एंड 890, दैट मीन्स फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड इन स्टेप 2। Z1 स्टार्टिंग टू टाइम्स कॉलन्स एंड -2, -2 मीन्स रिवर्स ऑर्डर में ऑल्टरनेट में आएंगे, एक एक एलिमेंट को छोड़ते हुए। 453.9, देन 890 को लेफ्ट करेंगे, रमेश आ जाएगा, देन कबीर को लेफ्ट करेंगे, 451.78 आ जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम एंड टिल बिगिनिंग इन स्टेप 2। Z1 -5 -2, -5 पोजीशन पे कौन है? 453.9, देन कबीर, Z1 5 2 -1, फिफ्थ पोजीशन पे 0 पे 121, 1 पे 451.78, सेकंड पे कबीर, थर्ड पे रमेश, फोर्थ पे 890 एंड फिफ्थ पे 453.90। तो 453.90 स्टार्टिंग में आएगा 453.90, देन 890 एंड देन रमेश। दैट मीन्स सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो अपर लिमिट है, उसको नहीं लेंगे। -1 मीन्स रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। 0 पे 121 है, फर्स्ट पे 451.78 है और सेकंड पे कबीर है, तो कबीर को नहीं लेंगे, रमेश तक लेंगे रिवर्स ऑर्डर में। -2 -5 -1, -2 पोजीशन पे उल्टे चलेंगे अगर हम ये, तो 453.90 -1 पोजीशन पे हैं, -2 पोजीशन पे 890 है, तो 890 आ जाएगा, देन रमेश आ जाएगा एंड देन कबीर आ जाएगा। क्योंकि -5 पोजीशन हम नहीं लेंगे, -1 पे 453.90 है, -2 पे 890 है, -3 पे रमेश है, -4 पे कबीर है और -5 हम नहीं लेंगे क्योंकि -5 इज द अपर लिमिट। Okay, that's all for today's session. Now I am ending the session.